Basically, what I have observed that neural network works like a brain neurons, and Yes. everything is connected to the earlier thing. That's why it is called a neural network. Yes, so basically for us human, the major important part in our body cell is our brain. So Hmm. basically it helps us how to function. So in same way, when we are trying to develop the model, so we need something which can control the entire model behavior, rather how the model should perform or the model should function. So that is how we are trying to major motivation behind designing a neural network was we are anyway trying to create a machine learning model which can mimic the way actually human works, how actually the human brain works. So basically for our brain, whenever we touch, whenever we get some input through our screen, through our skin, it goes into our veins, and through each cell, it goes to our head, and it generates some sense, and then our brain gives some response to the cell, and based on that, our human body reacts, right? Yes, ma'am. So basically, in same way, we are planning to design a model which will have some input, and those input will be passed through different layers of neurons. Here you can see this is the input neuron. This is the hidden layer of neurons, and this is the output neuron. All right. So basically here each and every neuron is connected to the next neuron, and from that next neuron the output would be generated. Till this part this is clear, right? All of Yes, ma'am. you? Yes, Okay. ma'am. So if you have any doubt, please let me know so that I can clarify your doubts, okay? And if you want me to speak in Hindi, I can do that as well. All right? So here, this is a small neuron which has input x, x2, x up to n. So basically, in a certain network, there could be multiple type of inputs. Okay. For example, if I I have a data set of, for let's say, 10 samples. So basically, in that case, what would be the number of x? X would be 10. So it can be varied. So that is why mathematically it is derived as x can be x1, x2 up to xn. Then it goes into the neuron section, like as the input. So whenever we passing the input, it will have certain amount of weight. Like for for example, x1 is the input one, it will have some separate weight corresponding to that. Similarly, it will have some bias as well. So whenever we are combining all those things will be going into a particular neuron, and then it will provide the output. This output would be treated as the input for the next neuron. So the neuron would learn, okay, so this far, this much of function has been already done. So I have to, make some other functions so that we can reach up to the output. For example, if today's class, I'm mostly going to design a neural network for binary classification. So when we talk about binary classification means my input is there, and based on that input, my output would be in a binary way. When we talk about binary, so there could be only two possibilities, either yes or either no. So for example, if today, if I give you one example of complaint identification, so in terms of binary output, what would be that? Either that would be complaint or non-complaint. Okay. For example of sentiment, you can say, ma'am, for sentiment there is three classes. How can be it binary? But in that way also, it will either positive or non-positive. Okay. Then comes to negative. Either would be negative or non-negative. Then comes neutral. Either would be neutral or non-neutral. So basically, it is. When your output is depending on zero or one order, it is binary. So today we'll be discussing about
how to develop a neural network which will take some sort of input and it will predict the output, which is 0 or 1. Okay, up to this part, this is clear? How many bias can It is based on the number of inputs. Like if you have, for example, have you got the data samples like Raghavendra has shared over the mail? I would suggest you to open that, and as well as your laptop. So today would be the demonstration class, but it would be happening in a dynamic order. So whatever I'm going to show you, I would request you to type it down in your laptop so that it would be like easier for you to understand like what is happening. Okay. So open your laptop and open your Google Colab as well. Also, do you want me to share this code with you right now so that you can type it, like it would be easier for you to do it? Should I share it? And for you guys, like, should I share the code with you so that you can, run the code simultaneously? For Mayank and Yajush, I don't know whether I'm pronouncing it correctly or not. Yes, ma'am, you can share the code, ma'am. We can uh, copy paste the code in Google Colab. Okay, sure, sure, sure. Okay, so guys, please open your Google Colab. If you have opened your Google Colab, please let me know. Open na? So you know now how to connect with the Google Drive as well. You just do one thing whenever you open the Colab, you just click on this button, and if you click on it, it will direct connect with your Drive. Okay? Is it clear? So those who have participated online, please let me know whenever I ask any question, just give me some response so that I understand that you are getting it clearly. So have you done with this mounting of your Google Drive? Are you done? तुम्हारा हो गया? तो ये गूगल कोलैब तो खुला ना? तो उसमें एक नया नोटबुक बनाओ. बनाने के बाद यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आएगा लेफ्ट में, तो उसको एक बार बस क्लिक करो, then it will automatically connect with your drive, like the mounting has been done. So it's done, right? Okay. So basically I talked about what neural network is, but there are some steps which I have to mention, that each layer of this neural network is called neural layers. Okay, so basically here we will have, as I mentioned, that there would be like input layer, there would be some output layer, hidden layer, there is a weight, bias, along with the activation function.
So what is activation function? So whenever we are trying to create one neural network, we want our neural network in such a way that it can deal with what can I say, non-linear situations. For example, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ एक न्यूरल नेटवर्क है जो कि सिर्फ और सिर्फ लीनियर सैंपल्स पे ही काम कर रहा है, मतलब उसको सब कुछ पता है कि कैसे कैसे काम हो रहा है. But what if हमारा real world situation is very complex and it's non-linear at all the time? So in that is why we need some activation function. So it will create some what can I say, like noise or some variations in our model, so that कि हमारा मॉडल वो variations देख के खुद ब खुद सीख पाए कैसे काम होता है. ठीक है, तो अभी दो तीन टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन होता है. फॉर एग्जांपल सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन. सो बेसिकली सिग्मॉइड इज अ फंक्शन कि जब तुम्हारा इनपुट और आउटपुट है, फॉर एग्जांपल लाइक बाइनरी, it will be creating a graph like S. S means the input, I mean the output will always rely between 0 to 1. तो ये कभी 0.1, 0.2, 0.5. So basically 0.5 is the threshold one. Okay, so I hope you got the emails where the data, I mean the code is there. All right. थ्रेशोल्ड मीन्स होता है कि मान लो कि मेरा जो प्रेडिक्शन मैं करना चाहती हूँ, मान लो 100% इज द फाइनल वन, राइट. तो मैं अपने मॉडल में एक थ्रेशोल्ड बोल रही हूँ कि 50% से ज़्यादा अगर इसका एक्यूरेसी हो रहा है, सो उसको मैं मान के चल रही हूँ कि हाँ ये बेटर रिजल्ट दे रहा है. सो थ्रेशोल्ड मीन्स अ वैल्यू कि जो कि कांस्टेंट है, इसके ऊपर होगा तभी मैं उसको एक पर्टिकुलर क्लास में बोल सकती हूँ कि या दिस इज गुड. ओके. And also one more thing, like whenever we what can I say, like whenever we design our model, so our model sometimes can overfit and underfit as well. like कि अगर तुम हम हमारे पास एक मॉडल है, अच्छा खासा मॉडल है, बट हमारे पास सैंपल्स बहुत कम है, तो मॉडल उसी सैंपल के बिहाफ पे वो कुछ सीखेगा. लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेस्टिंग, मतलब मॉडल का तो एक ट्रेनिंग फेज होता है, एक टेस्टिंग फेज होता है. एंड ट्रेनिंग फेज में हम जो सारे सैंपल्स दे रहे हैं, मेक श्योर कि वो टेस्टिंग फेज में ना रहे, क्योंकि हम मॉडल को चाहते हैं कि वो ऐसे सीखे कि जब टेस्टिंग मीन्स जहाँ पे कोई भी सिमिलर टाइप का सैंपल ना हो, उसमें मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रेनिंग और टेस्टिंग. तो अभी अगर हमारे मॉडल के पास सैंपल्स ही बहुत कम है, मान लो कि मेरे पास 100 सैंपल है, उसमें से मैंने ट्रेनिंग के लिए दिया 70 और टेस्टिंग के लिए दिया 30, तो वेरिएशन ही बहुत कम हो रहे हैं ना. तो ऑब्वियसली मॉडल विल नॉट लर्न प्रॉपरली, तो मॉडल विल मोस्ट लाइकली टेंड्स टू अंडरफिट. मॉडल के पास उतना इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा. फिर ओवरफिट मतलब क्या, कि मान लो कि मेरे पास एक मॉडल है जो कि नॉर्मल बाइनरी क्लासिफिकेशन तक कर सकता है. अब मैं उस मॉडल को, बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब क्या, दो क्लास, इधर 0 इधर 1, इस टाइप का क्लास होगा. अब मान लो कि मैं उस मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दे रही हूँ, एक ऐसा डेटा सैंपल देके जिसमें वेरिएशन ऑफ क्लास वो प्रेडिक्ट कर सकता है, मतलब प्रेडिक्ट करने बोल रही हूँ, मतलब सिर्फ दो क्लास वो प्रेडिक्ट नहीं करेगा, उसको 12-13 क्लास प्रेडिक्ट करने बोल रही हूँ. सैंपल्स फिर भी कम है. तो बेसिकली वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू दैट मॉडल, द मॉडल टेंड्स टू ओवरफिट. मान लो कि मैं एक मॉडल को बोल रही हूँ कि एक बॉल को प्रिडिक्ट करे राउंड शेप का, तो मैं मॉडल को बताते जा रही हूँ कि एक राउंड शेप होगा, एक फिर उसमें ये कलर होगा, ऑरेंज कलर होगा, एंड सो मेनी फीचर्स आई एम पुटिंग टू दैट मॉडल. तो एंड में अगर एक बॉल और एक ऑरेंज आएगा, तो मॉडल विल बाय मिस्टेकनली, क्योंकि उसके पास इतना सारा इंफॉर्मेशन हो चुका होगा कि वो उस ऑरेंज को ही बॉल मान लेगा. दिस वुड बी लाइक द नहीं ओवरफिटिंग, कि हम ओवर कर दिए, बहुत सारे फीचर्स डाल दिए. सो इन सारे सिचुएशंस में हम यूज करते हैं रेगुलराइजेशन,
ठीक है। सो ये सब कुछ मैंने इसके अंदर लिख दिया है, ये वाला जो IPYNB फाइल है। सो जब तुमको मिलेगा तुम इसको धीरे धीरे पढ़ लेना कि क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो टू थिंग्स, लाइक जब हम मॉडल बनाते हैं तो मॉडल का कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, तो हम उस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए लॉस फंक्शन डिजाइन करते हैं। एक होता है तुम्हारा मीन स्क्वायर एरर, कुछ होता है क्रॉस एंट्रोपी लॉस। So basically when we deal with binary classification, most of the time we use cross entropy loss. So आज क्योंकि ये पहला क्लास है, मैं उतना डिटेल्स में जाऊंगी नहीं, ऊपर से बस एक मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि क्या 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 चीज क्या होता है। ऑलराइट, सो दीज आर फ्यू लाइब्रेरीज। जब भी हम, ये कोड है ना तुम्हारे पास? नहीं नहीं, मेल मेल चेक करो। हाँ हाँ हाँ, मेल चेक करो। और फाइल का पाथ कॉपी करना अच्छा, मतलब पता है ना कैसे कॉपी पाथ करते हैं फाइल को? जस्ट मतलब यहाँ पे तुम एक काम भी कर सकते हो, कंटेंट में उसको ये कर लो, डाउनलोड कर लो वो complaint.csv को, वहां से तुम डेटा सेट में ये पाथ दे दो, हो जाएगा। अच्छा, so Mayank and Yajush, are comfortable with this, right? Ma'am, excuse me, ma'am. The file you have shared, I'm just can we upload it on Google Colab or? Yeah. I'm asking that only कि okay, first tell me, like, are you comfortable with Hindi, right? Yeah, ma'am. It's okay. हाँ, so मैं बोल रही थी कि तुम उसको डाउनलोड कर लो, करके अभी के अभी यहाँ पे मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे करते जाओ, तो ये तुम लोगों के लिए भी इजी होगा समझने में कि कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, और प्लीज मुझे रिस्पॉन्स देते रहना, वरना मुझे समझ में नहीं आएगा कि अदर I mean तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं। Ma'am, I'm uploading it, but I can't see that file. Which file? That copy of uh, yeah. Can you check your email again, because Raghavendra has sent this file again. Yeah. He have shared the email. Just do the refresh and hopefully the file would be there. Yes, I can see that all the files are over there. Yeah. You just open it in your Google Colab, and then you know now how to do the how to mount your Google Drive. बस कुछ नहीं, उसको अपलोड करो, फिर इधर जाके एक बार क्लिक करो, हो जाएगा। Yes, ma'am, I'm done. Continue. Okay. So basically, you know that what are the libraries are. Like pandas, what we do, panda is basically helpful for converting for creating the data frame. And then comes torch. So today's neural network building is based on pytorch. Then comes the optimizer as optim, and we are also using the sklearn. So you know now what sklearn is, like a library provided by scikit-learn. It will give you so many libraries so that you can draw something, you can call different processors, like encoding stuff and all. Okay, like it will give you a predefined function for different different neural network, what can I say, to perform different tasks. It will provide you a predefined function. For example, like as I mentioned, that you have to take your data set and you have to make it like train and test split. So it will provide you that structure, so that you can just by calling one line of code, you can split the training and testing data. So up to this part, this is clear, right? Yes, ma'am. Okay, so now the first part is you're pre-processing the data. So the first step would be like storing the data into a Panda data format.
Okay, so that is why I have called like pd dot read underscore csv and pass the data set. Okay, so here let me just run it, and if you just after calling it, if you just run the data, then you get to know like what are the columns in your data set is. So it is having 6280 rows across 7 columns, means I have these numbers of instances which are rows, and 7 different columns like complaint, severity, cause, emotion, etc. And here this is the domain, and this complaint slash opinion is our input text. So basically this data set is like financial complaint mining data set. So basically for each input this data set has that how severe that complaint is, what is the sentiment behind the complaint, what is the emotion behind the complaint. For this demonstration, you have to just focus on this task. Is it clear? Then comes data, and also this is the pre-processing step. If my data set has any, what can I say, null values, this line of code will drop those null values. Now coming to the part of vectorize the textual data. So when we talk about vectorizing the textual data means what? Like when you have textual data, how would your model understand that what is text, what is the words? So basically computer or any kind of machine only deals with numbers. For example, if you visualize something, you can only see the visionary or the color, only the those kind of visual stuff. But when it comes to a machine, like suppose I'm providing an image to a machine, how would the machine react on it? Based on the RGB values. Each image have different RGB values. Those are converted into arrays, and those arrays are understood by the machine. In the similar way, when we pass some textual information, those texts are converted into your vector numbers, and those vector numbers are further processed through the encoder and the decoder. The machine would perform its function based on the requirements, and that is how the machine understands. So basically here I'm using TF-IDF. So basically TF-IDF is another vector conversion mechanism. So basically, TF-IDF is really helpful. Here you can search it over Google, like what actually TF-IDF stands for. Basically, it's like what can I say? Terms frequency TF-IDF. Yeah. So term frequency inverse document frequency. So basically, it takes the words and it has some operation. It calculates that how many times that word has occurred, and based on that it would put some what can I say, priority or some weightage on it. And then comes that IDF, like inversely doing that. So this is a mechanism, and using that we are converting the text data into vectorized form. And after converting this vectorized form, we are passing this data to a label encoder. What is label encoder? This is a predefined function provided by scikit-learn. So basically label encoder means it will take the vector value and it would encode in such a way so that the machine get to know what is the that particular encoded portion means. Okay, after that here we are passing our y underscore complaint, means we are telling the label encoder that our ultimate goal is to identify the complaint. So as I mentioned, x would be our input, y would be our output. Is my screen not visible?
So here you can see, so the y equals to label encoder complaint. Transform means we are asking the model to transform the prediction, which is complaint level. We are trying to predict the complaint, whether it's complaint or non-complaint, and this would be our output. Okay, huh? Yeah. Okay. ठीक है ना? Now coming, as I showed you, what is data looks like, how many samples it has, how many rows it has, how many columns it has. Okay. So this is the section for sentiment as well as emotion. So why sentiment means I am asking the model to convert the level encoder through, through level encoder, I'm asking to transfer the data and try to predict the outcome for sentiment, as Y stands for output, and same goes for emotion, because today's class our basic major aim is to find out them. So now we are doing the training test split. X train, X test is the major part. Like X train means the entire training sample. X test means, Y test means the output of the testing. Where you can also, print them. ऐसे करके इसको प्रिंट करके देख सकते हो कि एक्स ट्रेन के अंदर कितने सारे नंबर्स, मतलब कितने सारे सैंपल्स है, देख सकते हो हाउ मेनी एरेस इट हैज. सेम गोज फॉर एक्स टेस्ट. And here we have to define x complaint, y complaint, then y sentiment as well, because we are trying to predict three classes. Okay, but one of the most important part is here test size equals to 0.2. What does it mean? Anybody? It means that we have 80% training data set and 20% testing data set. Very good, yeah. And then we are also initializing a random state equals to 42. Means whenever the splitting will happen, we have to make sure that each time at each split, the samples would be same. Okay? So now I am converting this data into PyTorch tensors, because when we are dealing with PyTorch, it only takes it can deal with only, like, rather than vector, it can deal with only tensor. So we are converting them into the tensor format. Here you can see this is the tensor. So if you want to see like how the tensor looks like, it will look like this. And oh, sorry, my bad. And see, for the complaint, it will only be shown like 0, 1. But in emotion class, there is total 6 different classes, and we are starting it from like list like 0, 1, 2, 3, 4, 5. So that is why the tensor looks like this. Means most likely, for example, the 5th emotion class is anger, and the 4th one is hate. So that is why these numbers are denoting that these samples are having this many of
classes. Now I am defining the feed forward network. So in PyTorch, when you design your own network, it will have a class, and below that you have to create your own network. So for example, this is the initial step where I'm creating a class as called a feed forward network, and here I am defining that I will have one FC1 layer, basically fully connected network one. Then I will have ReLU, means regularization form. I mean that method, because I know that my model could get like overfitted, underfitted, and all. Then I have another layer which is FC2, fully connected layer 2, and third one is fully connected layer 3. Okay, so here this 120 size is the dimension size. You can change it if you want. I would suggest that after this class you can change this value and you can see like what it looks like. So basically what I'm saying, that the input size would be this, and the corresponding to that the dimension would be 182, oh sorry, 128. Now as I said earlier that the in output of one FC layer would be the input for the next layer. Okay, so that is why when I am defining the FC layer 2, here the input is 128 like the previous layer, and it passing and with its new input size, I mean dimension size, which is 64. So now similarly this input would be passed to FC layer 3, and would be the output size. Okay, this is how I'm defining, and then I'm defining a softmax function. Softmax means like what would be like the outcome, like whether it rely to 0 or 1. So softmax function will give you like how it look like. Wait. Yeah, as I told you, so it would look like a S. So basically here would be 0 and it would be 1, and you can assume that 0.5 or 5 would be the threshold. So from here it would rely to the negative section. This is the positive one, and the value would, but the value would always rely to 0 or 1. Okay, so we have to define the softmax. And then coming to the feed forward layer, like X means the input, then we are just defining the feed forward layer. Okay, now the next thing, setting up the model with the loss function and optimizer. So here the input size is xtrain dot shape 1. Here 1 means we are taking the rows only. Okay, so we have rows and columns. So here this line is basically defined. This is a predefined line. So here 1 means the number of rows. So input is basically taking each and every complaints which are present in the row format. Now coming to the I have to train the model, so that is why this is the section for model training for complaint. So that's why I have written like model underscore complaint, and I'm passing the input to the feed for layer which I have designed over here. And here input size equals to 2 comma input size, and then comma 2 means is the dimension, like what could be the outcome. Since we are doing the binary thing, so it will either have complaint or have non-complaint. Okay, and one more thing, this line is basically used for GPU. You can see that in your Google Colab, it provides you one GPU. So you go to that runtime, then you can see this the change runtime type. So here you guys must be doing this work in CPU, but I would suggest not to change now because otherwise everything will be deleted. I am using T4 GPU. You all have T4 GPU.
So basically, whenever we try to train any model over Google Colab, so Google gives us GPU. So it's very hard to train any model in CPU over CPU. So we need to have larger GPUs. But since buying GPU is very costly, so Google gives us a few amount of GPU. So for this task, I have used T4 GPU. So you can use it, but I would suggest not to do it because otherwise your runtime will be deleted. I mean, till now, whatever you have done. So yeah, so as I said that I am asking this model to load into the GPU so that whenever I'm going to train the model, it can directly load into the GPU so that I can train the model precisely. This line. Okay. Now I'm calling this X-train tensor to move into the device. Device means here my GPU. So I'm asking each and every model to directly load into the GPU. Now defining the loss function, as I mentioned that here multiple type of loss you can use, but cross entropy loss is basically famous for binary classification. So since we are doing complaint non-complaint classification, we are just giving the binary cross entropy, and then we are using optimizer to optimize our model. So there are plenty of optimizer. Here I am using Adam optimizer, and I have used learning rate of 0.001. So basically learning rate, you know now how it helps to converge the model. So that is how it's done. Then here I have defined the epoch number is 100, but you can take it like 10, 20, 50. Epoch number means the number of times your model is training. Like whenever you are trying to train your model, epoch number is that many of time it will run behind and it will run. For example, you have 6,000 samples. Okay, so you need your model to train them. So epoch number 1 means the model will take all the samples, and for first time it will go through all the 6,000 samples, and it will know that this many samples, from this many samples the model will try to learn something. For example कि मान लो मेरे पास 6,000 सैंपल्स है, उन 6,000 सैंपल्स में से मैं अपने मॉडल को बोल रही हूँ कि तुम एक इपॉक के लिए तुम ट्रेन हो जाओ. एक इपॉक मीन्स कि वो 6,000 सैंपल को एक सैंपल दो सैंपल करके देख लेगा. पूरा देखने के बाद उसके पास आइडिया होगा, ठीक है ये मेरा सैंपल है, तो ये उसका एक इपॉक हो गया. अभी मैं अगर इपॉक 5 कर देती हूँ तो वो ये जो 6,000 सैंपल को बार बार रन कर मतलब पढ़ रहा था वो 5 बार देखेगा, तो उसके पास ज्यादा नॉलेज होगा. तो ऐसे करके मैंने अभी के लिए इसको इपॉक नंबर 100 कर दिया. बट मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम ये तो बहुत ही बेसिक न्यूरल नेटवर्क है, इससे भी तुम्हारा कुछ मॉडल एज सच बहुत अच्छी तरीके से रन नहीं करेगा, तो हम इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे मॉडल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल मैम जैसे बोले थे रोबोटा, देन अदर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल, तो उनके लिए जैसे इपॉक मैक्स टू मैक्स 5 टाइम्स हो जाता है या 10 टाइम्स हो जाता है, बिकॉज दे हैव मल्टीपल और समटाइम्स बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स. ओके, तो हमारे पास उतना सारा पैरामीटर नहीं है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ अ डेमो एंड योर अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव आई हैव केप्ट इट अराउंड 100. ओके, तो इतना तक समझ में आ गया. और फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, ट्रेनिंग अंडरस्कोर लॉस, मतलब कि जो भी लॉस कैलकुलेट होगा हम उसको भी पॉइंट आउट करेंगे कि हमारे मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए हाउ द मॉडल इज वर्किंग. सो बेसिकली दिस इज अ फंक्शन कि नंबर जिसके बढ़ाने अंदर पे मैम टाइम पे भी डिफरेंसेस आएंगे क्या? हाँ होगा डेफिनेटली होगा. सो बेसिकली तुम जितना नंबर ऑफ इपॉक्स बढ़ाओगे तुम्हारा नंबर और आई मीन तुम्हारा ट्रेनिंग टाइम और बढ़ जाएगा, ठीक है. बट हम ये तभी करते हैं कि अगर हमारा मॉडल बहुत कम तरीके से सीख पाए. मान लो कि मैं अभी इपॉक में 10 रख लिया, एंड में मेरा आउटकम आया मतलब एक्यूरेसी आया मान लो कि 40%,
तो मुझे क्या लगेगा कि मॉडल उतना सीखा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, ईपॉक को थोड़ा बढ़ा देती हूँ, बढ़ा के मान लो कि मैंने 100 किया तो मैंने देखा कि मेरा एक्यूरेसी 20% बढ़ गया। तो मतलब क्या, ईपॉक बढ़ाया, टाइम मुझे भले ही लग रहा है लेकिन मैं एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ। सो दैट इज द बेसिक नोशन बिहाइंड। कि अगर इपॉक बढ़ाने से नंबर ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ इनपुट डेटा है वो मशीन के लिए ज्यादा हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मशीन तो ऑलरेडी वो सारे सैंपल्स को लेके चल ही रहा है। इट्स लाइक कि वो बार बार पढ़ रहा है, ये नहीं कि तो उसका इन प्रॉब्लम। जनरलाइज टर्म मैम हम तो यही कहेंगे कि जितना ज्यादा इपॉक रहेगा एक्यूरेसी उतना ज्यादा रहेगा, या फिर कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं, कम हो इपॉक सक में भी एक्यूरेसी ज्यादा हो सकता है? ये हो सकता है, कम इपॉक के लिए एक्यूरेसी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत बार एज आई मेंशन ना, तुम्हारा ओवरफिट हो जाता है मॉडल। तो अगर हम इपॉक बढ़ाते जाते हैं, उसको जितना सीखना था वो सीख चुका है। अब हम बार बार, मतलब ये वैसे ही हुआ कि तुम्हारा एग्जाम नेक्स्ट दिन है, तुमको जितना समझना था तुम समझ गए। नहीं, हिट एंड ट्रायल पे क्यों? तुम पहले एक बार, हम जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑब्वियसली तुम्हारे माइंड पे तो एक नोशन है ना कि ये ऐसा काम करेगा। तो हम ये तो नहीं कि पहले ही दिन जो भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे वही तुम्हारा फुल एंड फाइनल है। वैसा तो नहीं है, तुम तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हो ना। तो मैं पहले एक्सपेरिमेंट करती हूँ 10 सैंपल से कि वो कैसे काम करता है। अगर अच्छा काम किया, मैं सैंपल्स बढ़ा दिया। सेम गोज फॉर इपॉक, कि 10 सैंपल पे 5 इपॉक में मैंने देखा क्या रिजल्ट आया। अगर अच्छा आ रहा है मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो मैंने बढ़ा दिया। सो दिस इज नॉट हिट एंड ट्राई। हिट एंड ट्राई कब होगा, जबकि मुझे आइडिया ही नहीं है पूरा कि ये करने से ये होगा भी या नहीं, तब मैंने रैंडमली कुछ पुट कर दिया। अभी मैं जो यहाँ पे 100 लिख रही हूँ, इसके पीछे मेरा एक आइडिया है कि मैं 10 दूंगी तो कम आएगा, इसीलिए मैं 100 दे रही हूँ। हिट एंड ट्राई में तुमको आइडिया ही नहीं कि 10 से भी क्या आने वाला है, 5 से भी क्या आने वाला है। ओके, सो दिस इज बेसिकली द ईपॉक, कैसे ये लॉस कैलकुलेट करता है उसके ऊपर। अभी मान लो कि मैंने ये कंप्लेन के लिए किया, तो टोटल 100 इपॉक्स है और हर एक 10 इपॉक पे ये लॉस कैलकुलेट करेगा। ठीक है। सो एंड में तुम देख रहे हो, इनिशियली इसका जितना भी लॉस था वो 10th वाली इपॉक में कम होके 0.31 आ गया। तो अभी अगर तुम और इपॉक का नंबर बढ़ाओगे, हो सकता है घट सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद तुम देखोगे कि इपॉक का नंबर तो बढ़ चुका है लेकिन मॉडल का कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। मीन्स मॉडल वहां से ओवरफिट करना चालू कर दिया। मतलब कि वही जो मैं बोल रही थी कि नेक्स्ट दिन तुम लोगों का एग्जाम है, तुम लोग जितना पढ़ पाते थे पढ़ लिया, अब तुमको जितना भी पढ़ा लो, तुम बस जितना पढ़ चुके हो उससे ज्यादा तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। सो दिस इज द सेम सिचुएशन विथ मॉडल। तो अभी हम हमारा मॉडल को हमने जितना ट्रेन करना था कर लिया। नाउ कमिंग टू द पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ओके, सो हियर द एक्यूरेसी डॉट 4F मीन्स हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा जो मॉडल का एक्यूरेसी है वो फ्लोटिंग इन टाइप में आए, लाइक परसेंटाइल के हिसाब से हम देख पाए। तो यहाँ पे हमारा वाइट टेस्ट कंप्लेंट है, फिर हम प्रेडिक्टिंग क्लासेस कर रहे हैं कि कौन से वाले क्लास में से वो बिलोंग करता है, इधर कंप्लेन और नॉट। ओके, so this is the entire training, I mean this is for the complaint, and this section is basically similar to complaint but this is for the sentiment only. Okay, initially what I showed earlier, that was only for the complaint class level. This below section is for the sentiment class level. Okay, here you can see the complaint results, लाइक टेस्ट सेट में इतना एक्यूरेटली इसने आइडेंटिफाई किया। ओके, कि 0.398 आउट ऑफ 1, बिकॉज ये वाले डेटा सैंपल में कंप्लेन एंड नॉन कंप्लेन दोनों का क्लास बैलेंस्ड है। so that is why model has learned very precisely. बट यही सेम चीज अगर तुम इमोशन के केस में देखोगे तो इतना अच्छा एक्यूरेसी उसको मिलेगा नहीं।
ठीक है। अभी ये सेम चीज तुम्हारा सेंटिमेंट वाला ही हो रहा था, मेरा बस थोड़ा सा ऊपर नीचे मिसमैच हो गया, तो ये वाला रन नहीं किया था। ये देखो, सेंटिमेंट के केस में इतना ज्यादा तुम लोगों का मतलब लॉस है। इट्स ओनली बिकॉज सेंटिमेंट हैज 3 क्लासेस। पहले हमारे पास जो सैंपल्स थे वो कंप्लेन नॉन कंप्लेन के थे, 2 क्लासेस का। लेकिन अभी जब सेंटिमेंट हो रहा है 3 क्लास हो गया। ऑल्दो ये क्लास प्रेडिक्ट होगा लाइक इधर न्यूट्रल और नॉट, इधर नेगेटिव और नॉट, इधर पॉजिटिव और नॉट, बट सैंपल्स बहुत घट चुके हैं, तो दैट इज व्हाई लॉस इसका ज्यादा है। ठीक है। अभी अगर तुम इसका एक्यूरेसी देखोगे, ये देखो, सेंटिमेंट का एक्यूरेसी 71, जबकि कंप्लेंट का था 93। सो इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारा सैंपल्स और उसका क्लास जैसा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितना नंबर ऑफ सैंपल्स तुम्हारे पास रहेंगे उतना अच्छा तुम्हारा मॉडल सीख पाएगा। ओके। अभी सेम वे में हम इमोशन को भी डिफाइन करते हैं। सेम टू सेम सिचुएशन होगा, बट तुम यहाँ पे देख सकते हो इमोशन का और भी ज्यादा है, बिकॉज इमोशन हैज ऑलमोस्ट 6 क्लासेस, बट नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत कम है। मान लो कि 6000 सैंपल थे, जिसमें से 3000 कंप्लेंट था, 3000 नॉन कंप्लेंट था। ठीक है। तो तुम्हारे पास एक बैलेंस रेशियो बना। सेंटिमेंट के लिए वो हो गया 3 क्लास। अब मान लो कि जहां पे तुम्हारा 3000 कॉम्प्लेन नॉन कॉम्प्लेन था, वहां पे तुम्हारा सेंटिमेंट के लिए 2000 2000 2000 करके बढ़ गया। अब तुम्हारा जब ये इमोशन पे आता है, वो 1000 1000 1000 करके बढ़ गया। सो दैट इज वाई ये रिजल्ट ऐसा आया कि टेस्ट में यही इमोशन का घट के 56 हो गया। तो तुम इसको इम्प्रूव कर सकते हो कैसे, कि मान लो तुम कंप्लेंट डिटेक्शन जब कर रहे थे, इपॉक तुम्हारा 100 था। अब जब तुम इमोशन करोगे, इपॉक का साइज बढ़ा दो, और हर बार तो तुम्हारा ये इपॉक में तो प्रिंट होगा ही कि क्या 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 लॉस है। अगर तुम देख रहे हो कि 14992 ये लॉस उतना ही हो रहा है, उससे नहीं घट रहा है, मान लो कि तुमने और 100 सैंपल के लिए रन कर लिया। अब तुम्हारा नेक्स्ट जो भी इपॉक होगा, उसमें तुम्हारा फिर से इमोशन लॉस 1499 ही आ रहा है 2 3 बार। तो तुमको तब पता चल जाएगा कि ठीक है, इपोक नंबर 100 ही ऑप्टिमल था, जो कि हमको रिजल्ट इतना दिया था। ठीक है। सो दिस इज बेसिक न्यूरल नेटवर्क। और इसको अगर तुम ऐसे प्लॉट करोगे, जो कि एस्केलान प्रोवाइड करता है तुम्हारा, तो तुम ऐसे देख सकते हो कि कैसे इसका लॉस हुआ। जैसे कि देखो, सबसे कम लॉस जो है वो है कंप्लेन का, एज आई मेंशन कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। फिर जो लॉस है कि जो 1.2 से घट घट रहा था, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, मतलब कम इम्प्रूवमेंट दिखा कंपेयर टू कंप्लेन, वो है सेंटिमेंट का। एंड लास्ट है इमोशन ट्रेनिंग लॉस, मीन्स इमोशन के टाइम पे ये सबसे ज्यादा इसके पास लॉस था। ठीक है। तो आज का डेमो क्लास इतना मैम, तक तो ही। लॉसेज जो होंगे वो क्लासेस के ऊपर डिपेंड करेंगे या फिर कंटेंट ऑफ डेटा सेट पे भी डिपेंड करेंगे? ये दोनों, आई वुड से कि ऑब्वियसली तुम्हारे डेटा सेट पे, क्योंकि तुम्हारा डेटा सेट में ही तो तुम क्लासेस डिफाइन कर रहे हो ना। कि मान लो कि मेरे पास 10,000 सैंपल है और मेरे पास 2 क्लासेस है, सो इन दैट केस इट विल वर्क। इवन कि मेरे पास 100 सैंपल है और मेरे पास 2 क्लासेस है, दैट ऑल्सो इट विल वर्क। बट मान लो कि मेरे पास 100 सैंपल है और मेरे पास यू नो 20 classes है, in that case it won't work. But in case of 1000 data samples, even if I have 20 classes, it will partially try to work. So basically it depends कि तुम अपने data set को कैसे create कर रहे हो। ये तुम मतलब सिर्फ number of samples matter नहीं करता, number of features also matters. ओके मैम। Any other question? तो इन एवरी केस मैम हम लोग को तो हमेशा इस पे वर्क करना रहेगा कि क्लासेस कम से कम हो।
नहीं, ऐसा भी नहीं है कि क्लासेस कम से कम हो, तुमको ये सैंपल्स के ऊपर डिफाइन करना है। मान लो कि अभी मेरे पास 6000 सैंपल है, ठीक है, तो उसके लिए काम हो गया। अभी मेरे पास और एक मैं काम कर रही थी, उसमें मेरे पास 600 सैंपल है, ठीक है, और मुझे पता है कि वो 600 सैंपल पे मैक्स टू मैक्स 6 क्लास ही बन सकता है, उससे कम नहीं बन सकता। तो इन दैट केस मेरा एक प्रॉब्लम आएगा क्लास इम्बैलेंस का। तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ सैंपल्स को इंक्रीज करती जाऊंगी। और अगर मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं है, देन आई विल ट्राई टू, मतलब ये दोनों एक दूसरे पे ना डिपेंडेंट है, नॉट नेसेसरीली कि मुझे हमेशा नंबर ऑफ सैंपल्स, आई मीन नंबर ऑफ क्लासेस कम करना होगा। अभी मान लो कि तुमको कुछ एक सेंटिमेंट ही प्रेडिक्ट करना है किसी का, तो सेंटिमेंट तो बाय डिफॉल्ट 3 क्लासेस होगा, तुम उसको घटाओगे कैसे, है ना? सो इट्स बेटर कि तुम पहले डिफाइन करो हाउ मेनी सैम्पल्स यू विल हैव एंड व्हाट आर द, आई मीन, important classes it might have. So basically they have to, work together. Understood, ma'am. Okay, so any other question? Okay, I guess guys this is it. Thank you for having me. Thank you so much, ma'am. Thanks. Satish.